अच्छा देखिए, today's lesson we have included the practical Python, and in this practical Python we are just going to understand the use of print statement, right? Print statement is used to print different strings. ये कोई string से मुराद आपको पता है क्या होता है? String basically is a combination of letters. More than one letter is called string. यानी अगर दो letters को आप लिखेंगे, यानी A और B अगर लिख देंगे तो A तो एक letter है या character है, but when it comes or concatenated with B it will be a string. ठीक है, तो स्ट्रिंग को अगर आपको प्रिंट करना हो, या कोई भी डेटा सेट को, कोई भी नंबर डेटा सेट को, कोई भी लेंदी स्टेटमेंट को या पैरामीटर्स को आपको प्रिंट करना हो, इफ यू वांट टू प्रिंट दैट, सो यू विल बी यूजिंग द प्रिंट फंक्शन. सो नाउ प्रिंट फंक्शन के लिए हमने तीन चीज़ों को आज अपने ऑब्जेक्टिव में रखा है. द फर्स्ट वन इज द प्रिंटिंग अ स्ट्रिंग इन पाइथन, and second one is the print blank lines by using \n, और the third one is the ending the printed statement, या जो लाइन स्टेटमेंट का एंड होगा वो किस तरह प्रिंट करते हैं विद द यूज ऑफ एंड कमांड. आप एंड कमांड को यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इट इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने छोड़ा हुआ है सिंगल कोट के साथ. जी मैं डबल कोट के साथ भी लिख सकता हूँ या सिंगल कोट के साथ भी लिख सकता हूँ. पाइथन दोनों स्ट्रिंग्स कोड्स को सपोर्ट करती है, सिंगल कोट को भी सपोर्ट करती है और डबल कोट को भी सपोर्ट करती है. Now before you start you must know about the print function. Python print function is used to print any message or a matter or a digital number data on the screen. The print command prints strings or objects which are converted to a string while printing on a screen. जो भी चीज़ आप जब स्क्रीन पर भेज रहे हैं इसको, तो स्क्रीन पर भेजने के लिए आपको चाहिए होता है कि जैसे हमने प्रैक्टिकल करते हैं तो हम जो चीज़ भी इसकी जो है एडिटर में लिख रहे होते हैं, उस एडिटर को बाद में प्रिंट स्क्रीन पर जाना होता है कि हम इसका आउटपुट देखें कि क्या आउटपुट आ रहा है. तो आउटपुट के लिए आपको प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो प्रिंट फंक्शन आपको आउटपुट की मालूमात देता है, जिसकी मदद से आप आउटपुट को मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं. यानी अगर आप उसको फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं कि मेरा फॉर्मेटेड आउटपुट हो करेंसी के हवाले से या फ्रैक्शंस के हवाले से, जिस चीज़ के हवाले से भी, या आपने कैरेक्टर के हवाले से करना है, तो वो आप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं. इसकी हम फॉर्मेट की कमांड्स हम बाद में करेंगे. लेकिन ये प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज टू प्रिंट एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और कन्वर्टेड डेटा विच कैन बी कन्वर्टेड लेटर और इनटू अ स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग आप प्रिंट कर सकते हैं. Now what you have to do is you have to load IDLE integrated development and learning environment of Python. This is a GUI version support which IDLE gives you, and start typing as follows. जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि first create a variable name. You are already aware of the creation of variable names. ठीक है, अगर मैं अपने मुल्क को represent करूँ या किसी भी मुल्क को represent करूँ, तो I will be just using one नेमिंग कन्वेंशन दैट इज माई कंट्री नेम. ये माई कंट्री नेम जो है ना, ये किसी भी मुल्क के लिए हो सकता है. कोई भी कंट्री इसके अंदर अपना नाम लिखेगी तो वो नाम उसका इसमें स्टोर हो जाएगा. फिर आपने क्या करना होता है कि असाइन वैल्यू टू इट. ये वैल्यू जो होती है, ये वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है और ये वैल्यू नंबर वैल्यू भी हो सकती है. इसी तरह जब हम वैल्यू किसी को असाइन करते हैं तो ये कांस्टेंट भी बन सकता है और वेरिएबल भी रह सकता है. वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि जो चेंज होती रहती है, कीप्स ऑन चेंजिंग. और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो रिमेन फिक्स्ड. ठीक है, अगर मैंने पाकिस्तान का नाम फिक्स कर दिया तो मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने पाकिस्तान का नाम फिक्स कर दिया. तो इस तरह अभी हम इसको फिक्स नेम के ऊपर काम कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को फिक्स करके इसका एक वैल्यू बना दिया और वो वैल्यू माई कंट्री नेम में स्टोर हो गई. अगर मैं इसको फिक्स नहीं करना चाहूँगा तो मैं इसके लिए दूसरी लाइन ऑफ कोड लिखूंगा जिसमें ये फिक्स नहीं होगा, वो वेरिएबल रहेगा. मुख्तलिफ कंट्रीज के नेम हम इसमें इनपुट ले सकते हैं. नाउ द वेरिएबल विद द वैल्यू विल लुक लाइक दिस. माई कंट्री नेम इक्वल्स टू पाकिस्तान. दिस बिकम्स द कॉन्स्टेंट. दिस बिकम्स अ कांस्टेंट. और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो देखें जो चीज आपने इसमें स्टोर की है, द थिंग यू हैव स्टोर्ड इन माई कंट्री नेम विल बी प्रिंटेड विद द प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट फंक्शन माई कंट्री नेम. ठीक है, इसका अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो आप देखें जरा, इसकी मैं आपको इसको शो करता हूं. ये देखें, ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है. ठीक है, ये मैंने इसका प्रोग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं. यहाँ पर देखें मैंने इसको रन कर दिया, इसको मैंने स्टोर किया पाकिस्तान को इसके अंदर. राइट, यू कैन सी दिस हियर. And then I printed this. This is a real code, and I have just given the heading of this thing, creating. Maybe you are not able to see this. I'm just now you will be able to see this. Okay, is that clear to you? You can see now. So this is the printing Python lesson 2, and now here you have defined the variable and you have assigned the value as well. Declare and define. You have declare and define. You declare
and initialize the variable. This is the declaration and initialization of the variable. Now you have defined. Definition means you have called the function. When you call the things in the running or on the running mode, in the current running mode, so that will be called a definition. So you have defined it also. You have declared and assigned the value. Now initialize the value, assign or initialize the value. Now here you are calling it, so that means you are defining this, and now you are printing welcome to the CS Academy. So basically this is the name which you stored in a variable, and you printed the variable, and here you have printed the straight away string, right? That is telling you something. Now this is about the first slide, first presentation that I was using. See, so this work we have done up till here. So now you can see I'm just taking you the next part. That is only one thing. The output you can see it here. Welcome to the CS Academy. Or first of all, I just printed Pakistan. It is here. This is Pakistan, and then the next line which I have just created the string. The meaning of a string, it should be clear to you that you can convert things into it. So this is the conversion of the string through the print function, right? Through the print function. Okay, so this way you can use the print function. Okay, so basically this is what happens when you just use the print function. Now moving on to the next part, that is that you will have to just create the separate print statements or something, that if you want to print the blank lines, so blank lines would be printed this way. You can see that I have used \n, \n. That means this will print 4 lines, and then you can see my country name will appear. See, I can just show you this. See, this is here. These are the 8 lines. These are the 8 lines which you can see over here. See, this is the output of this, and this is the output of this. Now I can just explain you further. This is 8 multiplied by \n. If you do not want to write or repeat /n, so you will multiply this with the number you want. That's mean total number of lines this, and this, after this you will have to display this name. And after that, if you want to just repeat the string line wise, so you will again do the same exercise, and you can see you are multiplying with the message body, and you have put the \n within the message body, and you can see that it will display 8 lines with the same message. You can see, I can show you. See, this is here. This is 8 lines, 1 2 3 4 5 6 7 8. So now this way this is working, and the last message is this is my Python course, and you can see this is my Python course is appearing here, right? So this way you can see that this works this way. Now see, okay, this comes over here. Now this is the program file. Now you can see, now I just want you to just print the names of 5 flowers. So I just wrote 5 separate statements of print, in which I just written 5 names of the flowers. Okay, now next last statement, which is here, I'm just going to show you. See, this is here. I'm just bringing this. See, the last statement, you can see it here. I think you should be able to see this. I'm just arranging this. See this, the last method is, you can see it here, right? Now this is the last one that I am just putting the end to this. So you can see welcome to comma and equals to empty space, and then the next line, the CS Academy comma and equals to sign of exclamation. That means this will be concatenated with this welcome to the CS Academy, right? So when I run this, you will see this, right? This comes over here. See, you can see this here. You can see this comes over here, right? So this way you can use the print statement in 3 ways. The first one is by declaring of a variable. You can see it here.
This is the variable, my country variable. Second one is the line, printing line, different lines, line wise, okay, multiple lines. And third one is the repetition of print statement, but the data is different. You have just put the numbers, 5 different flowers names. You can write your names, okay, your family names, your family structure. And then the last one is the print welcome to comma, and you have ended the string here, and then later on you again join the string with the CS Academy, or it could be any name, and end, that means come to an end with the exclamation, sign of exclamation. So this way you will be doing the practical. So I ask you to just start doing your practical. So I think this will help you a lot. So you are already aware of using print statement. So please record your response so that I can continue with that. I'm just waiting for your work. I hope you will enjoy this after completing this statement. So I hope you will enjoy this, and thanks for watching.